ओके आज क्लास स्टार्ट करछे देखो पिले आमे ऑडिबल टिके यस नो कर दिया आमे आको बढ़िया जीवन अच्छा होपफुली सुना जाउची ओके देख हमर आज टॉपिक अछि बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस बॉन्डिंग केमिति से माने बॉन्ड करंती केमिति स्ट्रक्चर तार आसे ए सब रिलेटेड बात ठीक अछि एथरे बहुत सारा थ्योरी अछि फर्स्ट तमर आसुची वेरनर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी जेटा प्रथम सब first the first theory proposed was Werner's coordination theory, then valence bond theory, crystal field theory, ligand field theory, molecular orbital theory. These last two are not included in your NEET syllabus. Maximum you have to learn up to crystal field theory and also basics of crystal field theory. Many more things are inside the crystal field theory, but basics you have to learn in plus 2 classes or NEET JEE level. Okay, so first one is your Werner's coordination theory. What is Werner's coordination theory? No, Alfred Werner discussed some points regarding the structures of the coordination complexes with some experimental data. Okay, those theories or those postulates are known as Werner's theory. It is based on the following postulates, important postulates. Okay, जो मैंने पिले शुणुच तुम मैंने सेकेंड ईयर स्टूडेंट ए वर्ष पई क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट अछि आ तमरा कण नीट जेई में यार रीजनिंग क्वेश्चन टाइप लैंग्वेज वाला क्वेश्चन ए थिरु ही आछिछ ठीक अछि तो ताको ठीक करके टिके बुझिबा सेकंड द central metal possesses two types of valencies or linkages. One is your primary valency and another is your secondary valency. So, okay, so that is the pattern. This is a coordination complex CONH3 whole 6 Cl3. Okay, if you find out the oxidation state of cobalt, you will get the oxidation state as +3. Okay, that is, if I remove all the ligands and the counter ions, I will have only cobalt 3 plus ion. Okay, so it will form three ionic bonds with 3Cl minus to form a simple salt like COCl3. If I will give 3Br minus, then it will form COBr3. This is one simple salt of cobalt 3 plus. Or if you put SO4, it will give you CO2SO4 whole 3. Okay, this is also a simple salt of cobalt. These are the simple salts. On the basis of the simple salts, you have to find out the valence. Means in simple salt, cobalt is showing valency 3. What is the valency of cobalt in these simple salts? 3. So its primary valency is 3. Okay. Eta Alfred Nobel कहले किंतु एटा पिला एते उडे कांति जानिबा शॉर्टकट रे जल्दी कहि देखले कि 3 लिखुचे तो this 3 is nothing but your oxidation state of the central metal. Okay, so this is simply primary valency is the oxidation state of central metal, whereas a complex ray cobalt is connected with 6 NH3 ligands. These are called secondary valency.
So they are the coordinate bonds formed between total number of coordinate bonds formed between ligand and central metal. Okay. So last class ru bhi janiche the total number of coordinate bonds formed by ligands with central metal total central metal टा ଯେତିକିଟା bond କରିଛି କେତେଟା bond କରିଛି ଏଥିରେ 6ଟା NH3 ସହିତ 6ଟା bond ଓକେ ଏଇ 6ଟା ଯାକ bond କୁ କୁହାଯାଏ ତାର secondary valency और ଆମେ ତାକୁ କହନ୍ତି coordination number so ପ୍ରଥମ ଲାଇନ ରୁ ହିଁ ତମ mind ରେ clarity ରହିଗଲା যে the primary valency is nothing but the oxidation state of a central metal whereas the secondary valency is nothing but the coordination number of the central metal. Okay, clear? एतिक पर्यंत जानी गले कि प्राइमरी वैलेंसी कहियो माने इमीडिएटली ऑक्सीडेशन स्टेट को बुझिबो सेकेंडरी वैलेंसी कहियो माने कोऑर्डिनेशन नंबर को बुझिबो ओके हमें जानि छे प्राइमरी वैलेंसी का ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल रा कोथरे थाए पॉजिटिव सो या सहित जे भी लागिवो जे भी x y z जे भी लागिवो that can only be a negative ion or anion सेथि पय कहा जाय जे प्राइमरी valency is satisfied by कहा द्वारा satisfy से होचे only anions ओके प्रत्येक पॉइंट गोटे गोटे पॉइंट करी कहि जाउची प्रथमे पढिला प्राइमरी valency इज कोन कहली nothing but the oxidation state second one is your secondary valency is the coordination number second रे कहला primary valency is satisfied by only कहा द्वारा होची anions okay secondary valency is satisfied by कहा द्वारा satisfy होची ligands and the ligands can be positive negative or कहली neutral ligands can be positive negative and neutral किछि भी हो पारती एठी anions गुडा को only negative clear next point देखो एठी गोटे लेखा होईची primary valency is ionizable what does it mean ना प्राइमरी valency जहा सहित ई जो anion सहित लागिवो ठीक अछि प्राइमरी valency anion सहित कंबाइन करले they will form a ionic bond अब ए COCl3 COBr3 अंक भितर ionic bond होछि so primary valency is always ionic in nature so जेतल तम ताको पानी रे पकेबो it will break into ions in aqueous solution it will dissociate into corresponding ions so it is called ionizable valency whereas तम तने याको aqueous solution में पकेबो ई NH3 cobalt ठारू सेपरेट हो नाही so एटा ionize हो नाही so secondary valency is called non-ionizable valency clear at the point through which वाला ionizable non-ionizable पर्यंत पहुंची गला ठीक है नेक्स्ट कहला प्राइमरी valency is number of ionic bond एबे कहली it is ionic in nature हला it is equals to oxidation state whereas secondary valency is the number of coordinate bonds is equal to कौन है वाला coordination number okay so देखा इथेर किसी एक्सपेरिमेंटल डाटा अछि देख पाठ कहला एटा के बुझ ताहले तमे जानि परिबो केमिति से एक्सपेरिमेंटली ताको वेरीफाई करथिले सपोज यू हैव CONH3 this complex CONH3 whole 6 outside there are 3 Cl minus ions okay if you put excess practical में करि सारी थिबो excess AgNO3 ताले ये जो Cl minus है it forms AgCl white precipitate AgCl white precipitate okay
କେତେ ମୋଲ white precipitate ହଉଛି, the number of Cl minus outside the coordination sphere is equal to the number of ion white precipitate, number of moles of white precipitates. Okay, तो बाहर ओडिया रे कहले जेतिकिटा बाहर Cl थिबो सेतिकी मोल AgCl ର precipitate आसीबो। क्लियर? तो एटा एक्सपेरिमेंट करके वेर्नर पाइल। ठीक अछि, सेतिकाई देखा जेतले से प्रथम कॉम्प्लेक्स नेइतिले सेथरे 6टा लिगेंड अछि। देखो केमते लेखा होछि 6NH3 और अटैच होछि CO with 3Cl3। ओके, so इथे से एक्सरसाइज एनर्जी दबा देबो पाइले कोन 3AgCl। ठीक अछि, तो एथरे केतेटा Cl बाहर रहि गला 3टा। तो कौन हो गला यार आयोनाइजेबल वैलेंसी मींस प्राइमरी वैलेंसी लिखेन 3। ओके, ठीक है। देखा नेक्स्ट कहला एबे या पूर्व कॉम्प्लेक्स ता देखुतला एटा देखो CO Cl3 लेखा हैतला किंतु 6NH3 लेखा हैतला 6NH3 से केस रे कोन होतला एक्चुअल जो स्ट्रक्चर आकार लिखियो वर्तमान हम जेंते लिखुते this is nothing but your CONH3 whole 6 outside 3Cl will be there, but in this complex if you are trying to write as a coordination complex NH3 whole 4 एट देखो कोबाल्ट 6टा कोऑर्डिनेट बॉन्ड सबले करे तो बाहर दुटा सेल भीतर को आसीथिबो बाहर गोटे सेल आसीबो हबा। देखो जे ठीक रे देखिबो बाहर केतेटा सेल अछि आउटसाइड इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर ओनली वन Cl is present, so when you are giving AgNO3 it produces 1 mole AgCl। okay, from this one how much mole you are getting you have to find out the number of Cl atoms or ions present outside the coordination sphere। starting at देखो पहले ए भलिया ही होतला तुम गोटे स्पेसिस दे देथिबो CO3 plus तम कॉम्प्लेक्स रे अछि 6NH3 is there। okay, 3Cl minus is there। okay, if it produces 3 mole AgCl, then you will have 3Cl minus outside the square bracket। if it produces 2 mole AgCl, you will find this complex, first put 2Cl minus outside, then rest will be inside Cl3 whole NH3 whole 5 Cl। okay, total 3Cl will be present, 5 will be NH3 ligands। okay, if you are getting 1 mole AgCl, then you will find this complex। if you are getting 0 mole AgCl, then you will find this complex CONH3 whole 3, all the 3Cl atoms inside a square bracket or coordination sphere। okay, so these are the 4 complexes, and this is complex 1 taken by Werner, this is complex 2, this is complex 3, this is complex 4। okay, ताले ए चारिटा कॉम्प्लेक्स ए एक्सपेरिमेंट रो बाहर करथिले तो ए गुडा को कहा जाय वेर्नर्स कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। ओके, तो एथुर कोन सिखिला ठीक रे देखो सबु बेले फिक्स अछि कि तमरा सेकेंडरी वैलेंसी एथरे भी देखो कोऑर्डिनेशन नंबर ए कॉम्प्लेक्स 1 दे कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 6। ओके, एथरे भी कोऑर्डिनेशन नंबर कोन अछि 6, एथरे भी कोऑर्डिनेशन नंबर कोन हो जाउची 6 हला। जे पर्यंत मेटल लिगेंड तम चेंज करना कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स रहे
The coordination number means secondary valency. Secondary valency तमरा 6 रहुची किंतु cobalt तमरा दीटा oxidation state देखै परिबो गोटे +2 गोटे +3 तो ठीक है जानथिबा primary valency is variable whereas the secondary valency cannot be variable. Okay, so fixed thought है रखिबो. Again ଆମେ ଜାଣିଛେ covalent bond is formed by during secondary valency. ताମାନେ elegant set देखा आगे जाके जाउछ ताले जानि परिबो. एबे देखा गोटे मोल कथा कहतली सब तक कॉम्प्लेक्स different color आछंती because they are all not same compounds. Hello, the atoms within the square bracket forms a single entity and do not dissociate under reactions. ठीक है देखो एठी कहछि एथरा आयन संख्या देखो भीतर 6 टा NH3 बाहर 3 टा Cl तो 3 टा Cl देले कोन 3 टा आनायन ये दबो गोटे कैटायन ताले यार रेशियो कोन हो जाउछि ना 1:3 रेशियो 1 कैटायन 3 आनायन. ओके एथरे देखो जेतले गोटे सेल भीतर पुनी आसी गोटे सेल भीतर प्रेजेंट करला बेले बाहर दीटा सेल अछि तो दीटा आनायन गोटे कैटायन. ओके सो जो थिरे देखो इथरो पचार थियो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट conductance, which of the following complex ई चारटा कॉम्प्लेक्स दे दैछि ए चारटा भीतर which has the highest कोन तमरा electrolytic conductance ता माने कोन the number greater the number of ions more is the conductance. एथरे देखो केतेटा आयन होछि 4 ions 1 cation 3 anion एथरे 3 ions एथरे 2 ions एथरे गोटे ही कॉम्प्लेक्स रखला. ठीक अछि तो एई गुडा करे हमर कोन हो जाय छै इटा टिके मिस्टेक रह जाय छै एटा देखो 3 हबो एटा 3 हबो. ठीक अछि Cl टा भी करबो पड़े. ओके सो एटा हे जो तमरा एथरे 1 गोटे ही स्पेसिस रहु. ठीक अछि तेन कर सब थारो हाईएस्ट कंडक्टेंस को थरे आसीबो एई कॉम्प्लेक्स रे. सिंपली तमर काम हला प्रथम कॉम्प्लेक्स एटा लेखिबा पूरा सिंपलेस्ट वे रे कह देली CONH3 होल 6 Cl3 नेक्स्ट गोटे Cl भीतर को नबो गोटे NH3 बाहर को नै जीवो CONH3 होल 5 Cl2. ओके डॉट NH3 जो NH3 में गला ये पता. ठीक है पता नहीं CONH3 होल 4 Cl2. ठीक है एठी रह गला CONH3 होल 3 Cl3 आउ बाहर नहीं आउ बाहर तमरा Cl नहीं तो खाली डॉट NH3 लिख दो काम से. ठीक है क्लियर ए पर्यंत क्लियर है. अच्छा सुनो आ गोटे जिनस कहूँ ये जो इम्पोर्टाटली तुम देखिपर गोटे इम्पोर्टाट पॉइंट आसे जे आसब सेकेंडरी वैलेंसी सॉरी प्राइमरी वैलेंसी कैन act as both primary valency and secondary valency when present inside the square bracket or coordination sphere. Coordination sphere भितरे जेतबेले तमरा प्राइमरी वैलेंसी का एंटर कर जाय कि देखै कि Cl आसीचे Cl is behaving as a ligand here so it is counted for कोन है secondary valency कोन पे ना ए complex रे secondary valency is due to 6 NH3 एथरे secondary valency is due to 5 NH3 and 1 Cl minus. Okay एथरे देखा secondary valency is due to 4 NH3 and 2 Cl minus. एथरे देखा secondary valency is due to 3 NH3 and 3 Cl minus. तो जितना बेले भी Cl inside the square bracket present होती बाहर आसी के भीतर पहुंच जाउची से सेकेंडरी वैलेंसी रा भी काम करूची किंतु से प्राइमरी वैलेंसी आगरो थिला ता काम छाडिनी कोन पे
ऑक्सीडेशन स्टेट भी यार जदि देखिछ कोबाल्ट रो 3+ रहउची केमिति ना ए माइनस 1 A2 into -1 तो एटा दोची टोटल +3 चार्ज ऑन कोबाल्ट हबा तो से माइनस चार्ज रे काउंट हेची माने ऑक्सीडेशन स्टेट भी कैलकुलेट हैला सेकेंडरी वैलेंसी भी हैला बोथ काम करे किंतु देखै बाहर जो डॉट एनएस अछि से थिला सेकेंडरी वैलेंसी बाहर को गला परे किछि काम करू नाही reverse या इस statement का secondary valency can act as both the primary and secondary valency is not true secondary valency का both रा role play करी परिवा नहीं only primary valency तो square bracket भीतर रहना both ligand and oxidation state time calculate हुए so it behaves as primary and secondary valency both हमें ताको चित्र आकार रे देखिया को जाउछे जे केमिति से रिप्रेजेंट करथिले ऐसे कहले प्राइमरी वैलेंसी इज शोन बाय डॉटेड लाइंस सेकेंडरी वैलेंसी इज शोन बाय सॉलिड लाइंस ओके देखो एबे कहथले कंडक्टेंस कथा एथिरे 6टा लिगैंड 6टा NH3 अछि ता माने बाहर की अछि ए कॉम्प्लेक्स ता CO हटले लिख कर दिए एटा हे गला CO NH3 whole 6 Cl3 so it has 3 ions outside so it shows total 4 ions and the conductance is highest 390 it has 5 NH3 means CO NH3 whole 5 Cl outside 2 Cl minus are present so its conductance is less conductance is less 261 and gradually it decreases up to points जेतले चारिटा तीनटा लिगैंड हो जायछि सब पर्यंत से कंडक्टेंस देखा नेक्स्ट CO NH3 whole 4 Cl2 outside 1 Cl is present it shows 102 conductance okay so gradually it decreases conductance clear metals and coordination compounds shows two types of valencies it is already known to you so important points primary valence is ionizable satisfied by negative ions called anions negative ions anions okay secondary valence primary valence is present outside the square bracket okay C if you have a metal with 6 water they are shown with the solid lines the primary valence is shown by dotted lines okay so remember one and last one I am going to say these are coordinate covalent bonds these are coordinate covalent bonds so they have orbital overlapping so these are always remember secondary valency is directional combined overlapping they are always directional and gives geometry or shape of the complex octahedral haba tetrahedral haba kon structure asiba eta decide ke karuchi secondary valency okay but primary valency is ionic starting to consider it is ionic those which are ionic are non-directional or are always non-directional so they do not interfere or they do not decide the geometry of complex okay so the secondary valency is non-ionizable here it is satisfied by positive negative or neutral ligands okay secondary valency is equals to coordination number and is always fixed particularly secondary valency the fixed type primary type variable type ठीक है metal ligand लागिछि so एथिरे H2O टा होचे तमरा कोन secondary valency ठीक है बतन secondary valency एथिरे की अछि तीटा Cl लगिला ठीक है देखा आउ के देखा एबे जो गुडा डिस्कशन करथिले CO NH3 whole 6 Cl3 केमते लेखा होछि 6टा सॉलिड बॉन्ड अछि 6टा
solid bond ଅଛି 1 2 3 4 5 6 ସେମାନେ ଗୋଟେ octahedral ମାନେ ଏଇଠି ରହିଲା center ଚାରି କର୍ଣ୍ଣର ରେ ଚାରିଟା ବଣ୍ଡ ଉପର ଗୋଟେ ତଳେ ଗୋଟେ octahedral ରେ fixed position ରେ ଅଛନ୍ତି whereas dotted CLs are can be present anywhere in the empty space. Okay, dotted line ରେ ଲେଖା ହେଇଛି କାହାକୁ ଆମର primary valence. Okay, so ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ CL ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ CL both ର role play କରିଛି because it acts as both primary valency and secondary valency. ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଗୋଟେ CL ରେ ଦେଖ ଦିଟା CL primary valency ଅଛନ୍ତି dotted line ଅଛି ଇଏ both solid and dotted line ରହିଛି. Okay, so next ତମର ଅଛି ଏଇଟା complex ଯେତେବେଳେ ଦିଟା CL ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ତ ଦିଟା ଯାକ both secondary primary ର role play କରିଛନ୍ତି last one is only primary valence. Okay, clear? These are the points. It is primary valence is shown by dotted or dashed lines. This is solid lines. It is equals to oxidation state. This is equals to coordination number. It is ionic, so it is non-directional. It is covalent coordinate, so it is directional. And it gives geometry. Gives geometry. It is ionizable. It is non-ionizable. Eighth point আছে it is satisfied by anions. This is satisfied by ligands. ঠিক আছে ligands এটা fix থাকে ঠিক আছে এটা থাকে fix sorry primary valence is variable it is going to be fixed for a particular metal and ligand. ଏତିକି ଜିନିଷ ହେଲେ ତମର ସବୁ distinction ବି ହେଇଗଲା ସବୁ points ବି cover ହେଇଗଲା. Okay, तो ସେଇଆ ଦେଖେଇ ଦେଇଛି ଯେ କେତେଟା ଆୟନ ରହିଛି ଦେଖ ଏଠି ଆୟନ ତମକୁ ଶିଖେଇ ଦେଇଥିଲି ଯେ କେତେଟା ଆୟନ ଆସୁଛି ନା ଯେ ଏଇ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ରେ 6ଟା ଏଲିମେଣ୍ଟ ଥିଲେ 3ଟା ଟୋଟାଲ 4ଟା ଆୟନ ଆସୁଛି ହବ ଏଥିରେ ଆସୁଛି 3ଟା ତାପରଟାରେ 2ଟା ଏଥିରେ ଆସୁଛି 0 ହବ କଣ୍ଡକ୍ଟାନ୍ସ କାହାର ହାଇଏଷ୍ଟ ଆସିବ ଯୋଉଥିରେ 4ଟା ସେମିତି देखो कहला primary valency of a metal can vary but secondary valency cannot vary remains same. Okay, eta ionic in nature satisfied by negative kintu eta satisfied by ligands. Okay, सब जिनस डिस्कशन कर सारे चित्र भी देख सारे आउथर खाली देखदेली सो दैट आउथर में क्लारिटी आसी ठीक अच्छे कलर कहले डिफरेंट आयन बाहर रही डिफरेंट कलर्स देखते ठीक अच्छे देख सी आइसोमर ट्रांस आइसोमर रे भी डिफरेंट कलर दुटा क्वेश्चन कर सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ मेटल कैन बी सैटिस्फाइड बाय जल्दी जल्दी कल सेकेंडरी वैलेंसी of metal can be satisfied by secondary valency coordination number is satisfied by what ligands satisfied by ligands can be जल्दी ट्राई कर ligands can be primary valence is satisfied by only anions but the secondary valence is satisfied by ligands. Answer will be positive है पारे ligand negative है पारे और कौन है पारे neutral. Okay, ligands can be positive negative neutral, so answer will be all of this. Okay, which of the following postulates of Werner theory is incorrect? Primary valence is satisfied by negative ions. Correct अछि. Secondary valence are satisfied by neutral molecules or negative ions. ठीक अच्छे positive हम नहीं करिए. Secondary valency is equal to coordination number and it depends upon nature of ligand attached to metal. ठीक अच्छे. The ions groups bound by secondary linkage
to the metal have characteristics of a spatial arrangement. हाँ ये मतलब इतने को टाइम करेक्ट है एथे अच्छे only negative have neutral molecule positive भी हो करेगा okay because 1 mole of a complex FTP gives 3 mole of ions on 3 mole ion logic man total kete mole ion lela 3 mole one mole of the same complex reacts with 2 mole of AgNO3 so 2 mole से तो interact करछि माने स्क्वायर ब्रैकेट बाहर केतेटा सेल रहइबो तीटा ताले बाकी समस्त जाक कोथरे रहिबे भीतर तो कॉम्प्लेक्स रो स्ट्रक्चर ता कोन हबो तो बाहर दीटा सेल भीतर गोटे सेल आंसर will be this one. Sorry this is 4 this is 5 okay yes. Let us go to the next theory, that is your valence bond theory. That is your valence bond theory. अरे अक्षर ना नहीं समझते पढ़े पढ़ेगा नहीं ओके ए पर्यंत कहार कोन डाउट अछि जदि टिके पचार दियो ताहले हम जाउचे नेक्स्ट थ्योरी दैट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी दैट इज योर VBT होपफुल दैट तम मनकर किछि डाउट नहीं हम बर्तन चलले नेक्स्ट थ्योरी दैट इज योर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी देखा सेतବେଳେ ଯେତବେଳେ ତମର ଭାଲେନ୍ସ ବଣ୍ଡ থিওরি ବାହାରି ଥିଲା ସେତିକି ବେଳେ ତମ ମାନଙ୍କର ସେଥିରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ନୂଆ থিওরি ଡେଭଲପ ହଉଛି ଠିକ ଅଛି ତ ଏଇଥିରେ ପ୍ରଥମେ କଣ କର ଏଇଥିରେ ପ୍ରଥମେ ତମର एक्सपेरिमेंट हुए एथिरे कौन हो जाए ना प्रथमे तार मैग्नेटिक मूवमेंट काढंती देन तापर ताको थ्योरी रे फिट करन भाबुची तमर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कॉलेज रे पढ़ा बने किछि मात्रा तो मु डिटेल्स रे कहि दउची आराम से बुझि जीव ठीक अछि देख कमेने यार एग्जांपल गुडा कहि क्वेश्चन ठीक अछि ठीक है देखो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी वाज एक्सटेंडेड to coordination compounds by Linus Pauling ठीक है तो एथिरे कोन कहला the formation of complex involves a reaction between Lewis base and Lewis acid हमें जानि छे मेटल लिगैंड भीतर कोन रहे कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहे ligands are electron rich so they act as Lewis base okay metals are electron pair acceptor ये शॉर्ट क्वेश्चन में प्राय तो पचारि छिपिले काउंसिल कोन एंट्रेंस से कोन देखो इलेक्ट्रॉन पेयर acceptor एठी ए अछि so it will be acid who acid na Lewis acid okay ए वे मन रख दबा के उल्टा पलटा करिवो ठीक अछि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट के करूची सेंट्रल मेटल कहा थारु करूची लिगैंड थारु तो जेहेतु एक्सेप्टर हला मेटल से होची लुईस एसिड जे डोनेट करूची इलेक्ट्रॉन पेयर से हेजवा लुईस बेस ओके फर्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वाला with formation of coordinate bonds or creative bonds ए बॉन्ड ता कोन होची कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्लियर ए भीतर क्लियर अछि मेटल लिगैंड भीतर को बॉन्ड रहला कोऑर्डिनेट बॉन्ड लुईस एसिड इज सेंट्रल मेटल Lewis base is your ligand. Okay. VPT utilizes the concept of hybridization. If hybridization हुए
ଏବେ କହିବି ଟିକେ ଖାଲି ଏତିକିକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିଥାଅ ଏଇ ଲାଇନଟାକୁ ଦେଖିଥାଅ କଣ ଦେଇଛି ନା ଏଥିରେ two set of orbitals are used ହୁଅନ୍ତି ns orbital use ହେଇପାରିବ np ହେଇପାରିବ ns the outer n is higher value so it is outer shell if n minus 1 d electron ଏବେ example କଲେ ଜାଣିପାରିବ ଯଦି involve ହୁଏ n minus 1 d ତାହେଲେ ତାକୁ କହନ୍ତି hybridization ଆସିବ ଯେତେବେଳେ এটা inner cell d ଅଛି inner cell ତେଣୁକରି ଏଥିରେ ଦିଟା type ର complex ଆସିବ inner d complex ଯଦି ns np and nd orbitals are used then it is called outer d complex okay এই দুইটা word ତମର ବହୁତ important okay ଦେଖିବା hybridization କେମିତି these hybrid orbitals are allowed to overlap with ligand orbitals that can donate electron pair for bonding ଏମାନେ ହିଁ ଏଇ orbital ଗୁଡାକ ହିଁ electron accept କରନ୍ତି ligand ପାଖରୁ ଠିକ ଅଛି ତାପରେ magnetic moment ର formula ଜାଣିଛ magnetic moment ର formula ହଉଛି ଏଇଟା magnetic moment mu is equal to mu s is equal to n into n plus 2 ର root over bn तुमको लास्ट टाइम भी शॉर्टकट रे कॉपी देइथिली शॉर्टकट रे केमती यूज करंती n रा वैल्यू जहा देखियो सपोज n is equal to 3 mu is equal to 3.9 पके दो 0.9 बसे जीव ठीक अछि n is equal to 4 असले mu s is equal to 4.9 bm पके दो ठीक अछि केवल mu n is equal to 2 थिले ताको mu रे लिखिला बेले 2.89 लिखिला 2.9 न लिखि 2.89 n is equal to 1 थिले mu s is equal to root over of 3 that is equals to 1.732 bm बस एति जाने वाले तमरा सब मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट कर परिबो if n is equal to 0 mu is equal to 0 the complex will be diamagnetic otherwise it will be paramagnetic एति जिंस मैग्नेटिक बिहेवियर रे यार अछि तुमको complex to identify करियर अछि whether it is diamagnetic or paramagnetic okay so हमें एतिकी जिंस देख केमती हाइब्रिडाइजेशन प्रेडिक्ट करिया डायरेक्ट एग्जांपल को चला ताहे जानि परिबो एउडा तो केमती आसी जदि हाइब्रिडाइजेशन sp आसे स्ट्रक्चर आसीबो लिनियर हमने मेटल रहिबो एपटे ओटे लिगेंड this is 180 angle and it is linear if sp3 sp2 hybridization then it will form a trigonal planar ligand trigonal planar complex okay these are the structures ठीक है तो देखिए sp3 हेले ताको कहंदे tetrahedral पढिचे ठीक है बट एथि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रे आ कोन आसीबो ता विषय रे डिस्कशन करिया चलो आउ लेट न करके एगुडा का सब टाइप कोन आसीची एक्सपेरिमेंटली सेटा करिचे प्रथम कॉम्प्लेक्स जो गुडा का कॉम्प्लेक्स इंपोर्टेंट से गुडा का सिखै दोचे so that the तीनटा सिखियाले तमरा हिज ठीक अछि प्रथम कॉम्प्लेक्स अच्छा एटा को टिके पिले देख एक्चुअली हमर दिले जिंस अछि गोटे ए जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिखा है जी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कौन ना इट गिव्स द पावर और स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स एटा एक्चुअली बाहर थिला सीएफटी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी टाइम रे बट जदि तमे एटा एबे तो बाहरी चलानी तमे एतो जदि पढ़ जाबा तमरा जीपीटी विल बी टू इजी फॉर यू ए थिरो नीट रे क्वेश्चन आसीची नीट रे क्वेश्चन आसी एटा देखो तापर क्वेश्चन टाइम अछि करिया ठीक अछि प्रथम जिंस स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जानिया को पड़िबो या को टिके जानिया पे गोटा शॉर्टकट कहछि टिके ध्यान रखिबो प्रथम आसंती कार्बन देन नाइट्रोजन डोनर्स then oxygen donors, then halogen fluorine, then in the third row, you will have sulfur donor, then you will have Cl, then you will have Br and I. This will be the sequence.
प्रथम देखा स्ट्रॉन्ग साइड माने हायर साइड रे कार्बन डोनर आसीबे के कार्बन डोनर अछंती CO कार्बोनिल एंड CN माइनस ओके स्ट्रॉन्ग डोनर साइड रे के आसीले कार्बन डोनर ओके देन आसंती नाइट्रोजन डोनर देखा CNO2 माइनस एथिलीन डाइयामिन NH3 pyridine NCS minus the minus sign is on nitrogen NCS minus okay clear these are the nitrogen donors okay after nitrogen donor then comes the oxygen donors are H2O C2O for 2 minus ethanol or OH minus this is okay take it oxygen donor then oxygen donor OH sorry H2O water oxalate OX minus 2 and this is your hydroxide OH minus okay then comes your halogen F minus is there after that generally comes your sulfur donors F minus then Cl minus then comes your sulfur donor C this is sulfur donor this is sulfur donor then comes Br minus I minus okay remember तुमको चारिटा देछि गोटे सपोज देछि Cn minus गोटे देछि SCN minus तुम कहि दे परियो किछि जानिनो ए स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एमति कहि दे परियो डोनर आटम जानथिले हे जीवो this is carbon donor this is sulfur donor carbon donor is more strong ligand than sulfur donor okay suppose ମୁଁ କହିଲି NH3 H2O this is nitrogen donor this is oxygen donor NH3 will be more strong ligand okay En nitrogen donor F minus halogen donor this is nitrogen donor is more stronger ligand okay गोटे क्वेश्चन देखा ए सीरीज रो गोटे क्वेश्चन पढिछि एमिति चारिटा लिगैंड देछि NH3 En CN minus CO कोटा करेक्ट फील्ड स्ट्रेंथ ऑर्डर अच्छा ठीक है ठीक रे सुन था एबे जा कहछि जोटा हमर VPTCF फोर्थ रे दरकार आसीबो जेते कार्बन डोनर जेते याको स्क्रीनशॉट मारि रखिबो the carbon donor and the nitrogen donor carbon donor dita CO and CN minus ita kahile nitrogen donor all are strong field ligands kon kahile strong field ligands ठीक है jete oxygen to end parjanta oxygen ru end parjanta oxygen and halogen donors they are weak field ligands the tankara power come weak field ligands okay these are weak field ligands clear again carbon and nitrogen donors are strong field ligands whereas oxygen and halogen donors are weak field ligands okay देखो एबे कर करबो से कहला ए भीतर चारिटा लिगैंड देछि CO CN minus EN NH3 कहछि तांको फील्ड स्ट्रेंथ रे रखिबा आमे जंचे प्रथमे सब हाईएस्ट के आसी गला तमरा CO तापर के आसी जाउछि CN minus दिते देखो कार्बन नंबर तापर ए दी जण जाक अछन नाइट्रोजन नंबर बट या पाखरे केतरा नाइट्रोजन अछि एथिलीन डाइमिन स्ट्रक्चर हला NH2 NH2 so it has two nitrogen numbers so its strength will be more so it is more stronger ligand than kon hojibo NH session hela a sequence asiba kotha ठीक है so eta hojibo answer next eta dekha NEET 2020 ର क्वेश्चन ए फील्ड स्ट्रेंथ ऊपर पड़ी चलो तुमको देछि चारिटा लिगैंड गोटे अछि CN minus आ गोटे अछि oxalate COO minus C2O for 2 minus is oxygen donor आ गोटे अछि F minus आ गोटे अछि SCN minus माने सल्फर donor
तुमको एटा कहथिली कार्बन नाइट्रोजन देन कोन चेक करिवो ऑक्सीजन तापर फ्लोरीन तापर आसीबो सल्फर तापर क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एटा सीक्वेंस होला ताले प्रथम कार्बन नंबर के अछि Cn माइनस ताकू फॉर्म रे की आसीबो हमको माने असेंडिंग ऑर्डर रे दैछि Cn माइनस पर ऑक्सीजन एन डोनर की अछि नहीं एन डोनर के ना ऑक्सीजन डोनर के अछि oxalate, the oxalate formula है C2O4 minus. Then comes your oxygen, fluorine donor. So F minus will be there. Then comes your sulfur donor, ASCN minus. Okay, so this will be your answer. Okay. Which of the following is or are strong field ligands? Chapter ligand is put a strong field haba. CO correct अछि गोटे अछि ना आ अधिक अछि टिके चेक करो स्ट्रांग फील्ड रे के थले कार्बन डोनर एंड तमरा नाइट्रोजन डोनर एथि गोटे कार्बन डोनर अछि ना अधिक अछंती एटा तो गोटे कार्बन डोनर ठीक अछि Cn माइनस भी कार्बन डोनर ना तो बोथ ही करिए ठीक अछि हालोजेन ऑल हालोजेन्स पिले जहार से सीरीज मन रहुची +2 लेवल पाई एतिकी भी मन रख दिया CO सबुठु स्ट्रांग Cn माइनस दरकार नहले हबो नहीं ठीक अछि En NH3 ओके और NCS माइनस रख देला तापर तमे वाटर ऑक्सीजन डोनर रे ए तीनटा H2O oxalate C2O4 minus OH ए तीनटा तापर डायरेक्ट हालोजेन्स चारिटा जक सेम सीक्वेंस रे F minus Br minus I minus सॉरी Cl minus सॉरी it is Cl minus Br minus I minus ओके एतिकी मन रख देले भी हे जीवा स्ट्रांग फील्ड है वाला नाइट्रोजन डोनर जे स्ट्रांग फील्ड oxygen and halogen donors are your weak field ligands ठीक है जरूरी या बिना भी बीटीसीएफ तुम करि परिबो नहीं क्वेश्चन गोटे भी करि परिबो नहीं ठीक है Cn and CO minus yes sir Cn minus and CO which of the following is weak field ligand सेम क्वेश्चन ता अछि weak field के रहिले तो जो बीटा स्ट्रांग पळेले बाकी बीटा कौन है जी आंसर कौन हबा आंसर will be A and B very good okay let us move forward ठीक है ଏବେ complex ର structure କରିବା VBT for efficiency 3 minutes प्रथम काम VBT ଯେତେବେଳେ କରିବ प्रथम काम तमरा ହେଲା तो कौन करिवो ना एटा करिवो तार ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe केमति बाहर करिवो x I have taken x for Fe then 6 into Cn minus means minus and charge on Cn is equal to -3 total charge is equal to -3 so x is coming at +3 so oxidation state of Fe is +3 okay
Now, if we know the electronic configuration of Fe, outer electronic configuration is 3d6 4s2. So it gives you Fe3 plus ion by removing 3 electrons. 3 electrons are going from 2 from 4s and 1 from your 3d. So remaining electrons are 3d5. If you know this configuration, then go for orbital picture. Okay, so box diagram like structure. This is your 3D subcell. 3D has 5D orbitals. Then comes your 4s. Then comes your 4p subcell. Okay, this is 3D. This is 4s. This is 4p. Okay, so D5, you have 5D electrons in 3D subcell. Put the electrons according to Horn's rule. That is, you have to give one electron to each subcell. प्रत्येक subcell रे गोटे करके 5टा इलेक्ट्रॉन रखिबो, देन पेयरिंग करिवो जति बोलतो क्लियर देखा systematically जाउची so that easy हो जिवो बुझिवा पई but now you are given this is all about your central metal. Now you have to give ligands. There are 6 ligands, so I will put 6 into which ligand you have given Cn minus. Now this is Cn minus is a strong field ligand. This is strong field ligand. It has more power that it will repel the 3d type electrons. Say it in 5टा electron को repel करिवो. Repel करिया जो गोटे जिंस मन रख pairing occurs. काम हला strong field weak field जानिबार फायदा एटा. If you know it is a strong field ligand, pairing will occur. Pairing will occur. Pairing of electron will occur. Repeatedly I am saying in strong field ligand pairing occurs. Okay, so pairing करिवो केमति करिवो ना Fe3 plus रखिला 5d orbitals are there. 5d orbitals are there. Then comes your 4s, then comes your 4p. Okay, so this is 3d, this is 4s, this is 4p. Now 5 electrons will be paired. How many complete pairs will be there? Now 2. How many half pairs will be there? 1. This is your unpaired electron. 1 unpaired electron is remaining. Okay, 5 electrons, 2 complete pair and another half pair. That is 1 unpaired electron. Okay, we will write this one. Then comes the hybridization part, important part of the BBT. You have 6 ligands. You need 6 empty orbitals. The number of empty orbitals required is equals to number of ligands taken. म्हणजे 6टा लिगैंड नहीं मतलब 6टा खाली घर दरकार, तब 4टा नहीं 4टा दरकार, 5टा नहीं 5टा दरकार, सिंपल. ओके, सो 6टा खाली घर एठी देखा गला प्रथमे. नाउ यू हैव टेकन 2 फ्रॉम D, so I will write D2, then 1 from S, so S will be here, 3 from P, 3 orbitals from P. So it's a hybridization is D2 sp3 hybridization. Clear? केमते hybridization हला again कह दोची प्रथम का को नेचे dटा D, so D2 गोटे S, so S 3टा P orbital नेचे, so P3. So hybridization is D2 sp3. देखो एटा हला 4s रखली एबे important जिंस पहुंच एग्जाम रे क्वेश्चन कोन था. This is 4s. This is n minus 1, that means 3d. Means 3d is inner D subcell to 4s. Inner D subcell to 4s. So this माने simple ओडिया रे हमने जल्दी बुझिबा s पूर्वरु आसीची d, s पूर्वरु आसीची d. Yes, very good. This is called inner D complex. Inner D complex. Okay, exam रे ए गोटी कहू वार्ड देइबो
If you have inner D complex, that will be the hybridization. The hybridization will be D2sp3. Okay. ଏତିକି ପରେ ତମ କାମ ହେଲା ତମେ ଜାଣିଛ ଏଥିରେ କାହାକୁ ରଖିଦେବାର ଅଛି Cn minus. Each empty orbital will coordinate with 1 Cn minus, and it will form 6 coordinate bonds. 6 coordinate bonds which will provide 2 electrons to each empty orbital. Okay, now you know the structure. The structure will be like this. Fe will be at center and 6 coordinate bonds formed by Cn. Okay, so charge will be 3 minus. Its geometry is your octahedral. You know now the hybridization. Hybridization is your D2sp3. So it is inner D complex. Okay, inner D complex. Remember, now you have to find the magnetic property. Okay, so you have number of unpaired electrons n is equal to पिला कौन करंती इस स्टेप रे देखि देबे फुल कॉम्प्लेक्स है 80 पेयरिंग पर लिगेंड सहित इथरे देखिबा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन so number of unpaired electrons is equal to 1. Magnetic moment will be √3 bm, that is your 1.732 bm. This is your paramagnetic substance. What is hybridization? It is the intermixing of orbitals of almost equal energy. It is the intermixing of atomic orbitals of almost equal energy to provide new equivalent orbitals. मिसिबा पूर्वरु पाखापाखी समान ऑर्बिटल थिबे एनर्जी वाइज पाखापाखी समान थिबे किंतु समान नथिबे मिसिला परे समस्त समान हो जिवे ठीक अछि ताकू कहा जाए हाइब्रिडाइजेशन से प्रोसेस को कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन ठीक अछि ओके सो नाउ पाठा कोन कहला देखा तो पैरामैग्नेटिक हे गला सब्सटेंस इज योर पैरामैग्नेटिक आगु तो इंपोर्टेंट जिंस कहली किंतु आ गोटे एग्जांपल पर एथरे इंपोर्टेंट रहला तमरा इनर डी कॉम्प्लेक्स कोथरे फॉर्मेशन होची जो थरे स्ट्रांग फील्ड लिगेंड यूज होची स्ट्रांग फील्ड जो कोन होची पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन आपस ओके नेक्स्ट देखा VPT of F6 बट वीक फील्ड कल एथरे देखा एफ पहला वीक फील्ड सेकंड थिला Cn माइनस स्ट्रांग फील्ड दीटा जकर फरक जानि गले तमे बाकी सब कर दे परिबा ठीक अछि सो नाउ लेट कोन करले ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe केते हे जाउछि कोहा ना एटा oxidation state of Fe is x plus 6 into minus 1 for F minus is equal to -3. So x is coming as +3. Again, Fe is in +3 oxidation state. Okay. So now you have Fe26 as 3d64s2. Now you have to convert it to Fe+3. So for that you have to remove 3 electrons. You are getting the configuration as 3d5. Now in box diagram you have 5 electrons in 3d
subcell, that is 5 orbitals have 5 electrons. Okay, then comes your 4s and 4p. This is your 3d. You have 5 electrons in 3d. Okay, now you are putting 6 electrons, 6 ligands. This is 6f minus ligand. F minus is your strong weak field ligand. Sorry, my bad. This is your weak field ligand. In weak field means no pairing of electron. This is the thing you must know for VBT and CFT. Strong field ligand means pairing of electrons. Weak field ligand means no pairing of electrons. Okay. Now, then you can do the rest of the things like this. It's very important. ଏବେ କହିଦଉଛି ପିଲେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣିବ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲାଇନ କହୁଛି ବହୁତ ପିଲା କଣ କରନ୍ତି କଣ ଭୁଲ କରନ୍ତି ସେ କଥା କହୁଛି ଏଇଥିରେ 3D 4s 4p ରହିଲା ଏଥିରେ ପେୟାରିଂ ହବ ନାହିଁ ଯୋଉ ପାଞ୍ଚଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଥିଲେ ସେ ପାଞ୍ଚଟା ହିଁ ରହିଯିବ ଓକେ now you need 6 blank or vacant orbitals but you have only for having 6 orbitals, you have to take the help of 4d orbitals. So your hybridization now will become, first you have taken S, then 3p, then your 2d means sp3d2 means sp3d2. First you have taken 1s. From P you have taken 3 orbitals, that is P3. From 4D you have taken 2D orbitals. Now see, you are taking an outer D orbital. If this is NS, this is NP, this is ND. So you are taking outer D. Okay. So it's a hybridization with sp3d2 hybridization and this is nothing but your outer D complex. This is your outer D complex. Okay, so you can put 6f minus here. Very good. Outer octahedral complex. Very good. ଯାହା ହଉ ଏଥିରେ ସେ କିଛି ପିଲା ପଢୁଛନ୍ତି ବାକି ମାନେ ଟିକେ ପାଠ ପଢୁନାହାନ୍ତି ଏ ସହଜ ଚାପ୍ଟର ଅଛି ଏଥିରୁ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ସବୁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ରେ ଆଜିକାଲି ଏଇଥିରୁ ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ପଡୁଛି ସବୁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ NEET JEE CFT VBT ବିନା ଯିବ କେମିତି ଠିକ ଅଛି so its structure is octahedral. Its structure is octahedral. Okay, geometry is octahedral. Okay, both D2 sp3 and sp3d2 will have octahedral geometry. But what about hybridization? Here hybridization is sp3d2. This is nothing but your outer D complex. Okay. And 8 magnetic property देखिए magnetic property देखिए n number of unpaired electron here you have 5 unpaired electrons so mu s will be 5.9 bm or root over of 35 okay this is your paramagnetic another question will be asked from here what will be the most important question here in which case you have two cases sp3d2 and d2sp3 which is high spin and low spin complex very good Manisha this is your paramagnetic complex now see the important point here see like a complex एथरे को फील्ड अछि weak field एथरे को फील्ड थला weak field रे
ଆମର ଯେତିକିଟା ଅନପେୟାର୍ଡ 3D5 ଥିଲା ତ ଏଠି 5ଟା ଅନପେୟାର୍ଡ ଥିଲା ଏଇ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ରେ ବି 5ଟା ଅନପେୟାର୍ଡ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଅଛି ତାମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ସ୍ପିନ୍ କେତେ ଥାଏ ପ୍ଲସ୍ ଇଣ୍ଟୁ କେତେଟା ଥିଲା 5 ତ 5/2 ଥିଲା ଟୋଟାଲ ସ୍ପିନ୍ ଏବେ B ଅଛି ଦେଖ 5/2 ମାନେ লিগ্যান্ড ଲାଗିଲା ପରେ ତାର ସ୍ପିନ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହେଇନାହିଁ ଯୋଉଥିରେ ଚେଞ୍ଜ ନ ହବ ଏଠି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ କରିକି ଲେଖିଲି it is କଣ ହେଇଯିବ high spin complex it is high spin complex this is your high spin complex okay ତାକୁ ସର୍ଟ ରେ ଲେଖନ୍ତି HS ଠିକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ୟା ପ୍ରିଭିୟସ ଟାକୁ ଦେଖ ପ୍ରିଭିୟସ ରେ ଆମେ କଣ କରିଥିଲେ ଦେଖ ଏଇଥିରେ ହାଇବ୍ରିଡାଇଜେସନ ଅଛି D2sp3 initially या पाखरे 5टा इलेक्ट्रॉन means 1/2 into 5 you have a spin 5/2 but after complex formation ligand देला परे से पेयर हो जाईची पेयर हो जिया फल रे ता पाखरे 5/2 spin नहीं दीटा पेयर हो गला गोटे अनपेयर्ड रहला गोटे अनपेयर्ड माने 1/2 spin रहिला ताले ता spin वैल्यू ता 5/2 रु कोठी के आसीची 1/2 पेयरिंग जो स्पिन कमी जाउची कमी गले it is कौन है जीवा ना लो स्पिन कॉम्प्लेक्स अब ताका हम कहला LS लोकसभा यस वेरी गुड सो एतिके जिंस जानि गले सुन एबे जहा कोची ताकू पूरा नोट करी रखि दियो एते स्ट्रक्चर एंट्रेंस रे करिया को पड़िबनी ए बॉक्स रे होई जीवा ए पर्यंत आमे पढुतले फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ता ପାଇଁ पढुतले कोऑर्डिनेशन नंबर 6 लिगेंड संख्या 6 थिबा ठीक अछि एथरे बीटा हाइब्रिडाइजेशन आछि D2sp3 मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग बेले तम केस रे किछि केस रे d ऑर्बिटल 5टा जाक खाली थिबे ହେଲା 5ଟା ଯାକ ଖାଲି ଥିବ ତ ସେଇ ଟାଇମ ରେ ବି ତମେ ଆଉ କହିବନି ସାର୍ କହିଥିଲେ ଯେତେଟା ଖାଲି ଅର୍ବିଟାଲ ଥିବ ନେଇଯିବ ବୋଲି କୋऑର୍डिनेशन नंबर 6 रे मैक्सिमम अलाउड d ऑर्बिटल सारे 2 ଯଦି 4ଟା d ऑर्बिटल खाली ଅଛି ବି ତମେ 2ଟା ନେଇ परिबो 5ଟା ଖାଲି ଥିଲେ 2ଟା ନେଇ परिबो काहेकि नहीं परिबो सेफ्टी रे कहबी ठीक अछि रीजन ता सेफ्टी रे कहबी किंतु एबे जानि था कोऑर्डिनेशन नंबर 6 थिले 2टा ही d ऑर्बिटल नहीं परिबो 3टा 4टा मने मने नहीं जीवो नाही ऑक्टाहेड्रल रे ओनली 2टा ही d ऑर्बिटल अलाउ ओके ठीक अछि आ गोटे हाइब्रिडाइजेशन आसिला sp3 d2 एटा केतबेले आसीछि न जेतबेले स्ट्रांग फील्ड लिगेंड रहुछि एटा केतबेले आसीछि न जेतबेले वीक फील्ड लिगेंड रहुछि तो एटा रे कोन हो जाउछि ना पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन आपस एथरे कोन हो जाउछि नो पेयरिंग ओके ठीक अछि यार स्ट्रक्चर ये कोन हो जाउछि ना या को हम कहउछि इनर डी कॉम्प्लेक्स एटा को कोन कहले ना आउटर डी कॉम्प्लेक्स जो कि पेयरिंग हो जाउछि से स्पिन कम होछि तेंकर इट इज लो स्पिन कॉम्प्लेक्स इट इज कोन हो जाउछि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होबा ठीक अछि यार स्ट्रक्चर आसीछि ऑक्टाहेड्रल यार स्ट्रक्चर आसिला ऑक्टाहेड्रल तो एतिक जिंस जानिबा जिंस ठीक अछि आ किछि जिंस कहउछि ताको ध्यान देति सुनो ए जो हाई स्पिन कांसेप्ट लो स्पिन कांसेप्ट आसे कोइरे ना D4 to D7 सीएफटी रे निजे प्रूव करिया हम याको जे D4 to D7 कॉन्फ़िगरेशन भीतर जे तमरा इलेक्ट्रॉन अछि एबे जो दिटा एग्जांपल करथले देखा एथरे D5 थिला इट इज इन बिटवीन D4 to D7 तो एथरे स्ट्रांग फील्ड रे अलग आसुछि देखो आरो वीक फील्ड ता भी करिছে D5 रो वीक फील्ड रे कले ताथरे मैग्नेटिक मोमेंट हाई स्पिन लो स्पिन आउटर इनर सब अलग हैला तो एई जिंस ता आसे का भीतरे D4 ରୁ D7 भीतरे ता पूर्व तो एई भीतरे weak field is not equals to strong field weak field is not equals to strong field D1 to D3 and D8 to D10 এই ভিতরে weak field is equal
equal to strong field. There will be no difference between weak field and a strong field. Clear? Important. If these are note point important करके कहूँ देखो गोटे मेटल अच्छे CO3 प्लस कोबाल्ट सहित जितेबाला ऑक्सीजन डोनर लिगेंड्स रहते लाइक H2O पिला इतरे टिके भूल कर दियंती H2O ऑक्सलेट 2 माइनस OH माइनस एमाने ऑक्सीजन डोनर लिगेंड्स रहले they behave as strong field ligands instead of weak field ligands. आमे जानथिले ऑक्सीजन डोनर सर माने एग्जांपल कह देली CO एमटी अछि OX3 3 माइनस एटा ऑक्सलेट रा कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स किंबा तमे एटा को नै करिबा CO H2O होल 6 3 प्लस ए भली केसेस नै वाला ठीक है। तो এই গুড়াকরে অক্সিজেন ডোনরটা কোন হবা কথা উইক ফিল্ড কিন্তু ইয়ে বিহেভ করুছি কোন স্ট্রং ফিল্ড হিসাবে ঠিক আছে। দুটা কমপ্লেক্স টিকে ইম্পর্টেন্ট নোট করিকি বা এক্সেপশনাল বিহেভিयर লিখিকে রাখি দেব ঠিক আছে বুঝিলা। আর গোটে লিখিব এটা তি দিন সারা হলা বাকি তক क्वेश्चन आंसर रे ठीक আছে। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 6 रा हमें एटा कहि परिबो एठी FECN6 देखो केमति धड़ा धड़ क्वेश्चन करंती FECN6 यार ऑक्सीडेशन स्टेट होची +2 माने ये को स्टेट रे थिबो 3D6 एथ लिगैंड के अछि Cn- इज योर स्ट्रांग फील्ड ताहले एथरे कोन हे जिवो पेयरिंग ठीक আছে पेयरिंग তাহলে মু 3D6 रे पांचटा ऑर्बिटल 1 2 3 4 5 थिला एया जेतले 6 Cn- ए जीवार ऑप्शन केमति क्वेश्चन करंते एंट्रेंस रे डायरेक्टली तमे जानला जे ए एबे कोन हे जीवा पेयर हे जीवा छटा इलेक्ट्रॉन पेयर हेले केतेटा ऑर्बिटल रे रहि जीवे तीनटा क्लियर तीनटा ऑर्बिटल रहि गले नम मैग्नेटिक मोमेंट काढुची n केते हे गला 0 mu केते हे जीवा 0 so it will be diamagnetic. This complex is diamagnetic. Sorry, this is 4 minus. This is 4 minus. Okay, this is diamagnetic. Simple. नहले पूरा सिखे देली पूरा स्टेप बाय स्टेप जीव हे जीव वर्तमान पर्यंत हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रा सारी देले यस कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रा सारी ठीक है। वर्तमान कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आउ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ए विषय रे देखिबा ठीक है। तो एथि ताई 5 मिनिट गैप नै जा तापर हमें कंटिन्यू करिया 5 मिनिट रे कंटिन्यू करिया ओके।
ओके वेलकम बैक एबे आमे कंटिन्यू करिवा हमर जर्नी आजिर ठीक अछि ओके सो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पर 4 सो किसी पिला बदे कटि गले ठीक अछि देखिबा बर्तमान कहले कोऑर्डिनेशन नंबर 4 व्हाट अबाउट कोऑर्डिनेशन नंबर 4 VPT of coordination number 4 coordination number 4 प्रथमे गोटे एग्जांपल कले NiCN4 2 minus so you have oxidation state of Ni is equal to x plus 4 into minus 1 is equal to minus 2. So x is coming as plus 2. Nickel has plus 2 oxidation state. So nickel 28 has 88 and 4s2. Now it will become Ni2 plus by removing 2 electrons from 4s. So you are getting 3d8 configuration. 3d8. If you are going to draw the box diagram for Ni2 plus, 3d will have 8 electrons and 5d orbitals. Those are 1, 2, 3, 4, 5. According to the Horn's rule, it is filled up. Then comes your 4s and 4p. Okay, so now you have to put 4 ligands. 4 ligands are 4Cn minus. You know Cn minus is a strong field ligand. So pairing occurs. Pairing occurs. If pairing occurs, it will give you this structure because 8 electrons are there. Those can be accommodated in only 4d orbitals 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Now you need 4 empty orbitals. Sarita amara khali orbital darkar. Kothi start hochi it from last d orbital up to this much. Okay, so the hybridization comes as d. One of the d orbital is taken, one from s, two from p. So hybridization comes dsp2 hybridization. Okay, dsp2 hybridization. Next, you have to put 4Cn minus here to show the 4 coordinate bonds. Okay, each coordinate bond provides 2 electrons to the complex. Okay, so the structure will be this one. Nickel has, as it involves one d orbital, one of the d orbitals, it will show you square planar geometry. Okay, because d orbital is involved and planar d orbitals are there, so it will show you square planar geometry.
Our geometry will be square line. Hybridization is your DSP2. Okay, ଏଠି pairing ହେଇଯାଉଛି, so it is କଣ ହେଇଯାଇଥିବ low spin. स्पिन देखा ना देखा कुछ पड़ेगा असुविधा, फिर भी देखते number of unpaired electrons, is equal to n is equal to a complex में देखा सब तक पेयर हो जाएगी, n is equal to 0, so mu s is equal to 0, so it is कौन हो जाएगी diamagnetic. Clear? ठीक है, नेक्स्ट देखो T complex पे देखो EBT of NiCl4 2 minus. Here you have oxidation state of nickel is equal to x plus 4 into minus 1 is equal to minus 2 and x is equal to plus 2. Again, this is a nickel plus 2 complex. Nickel's atomic number is 28, its electron number is 3d, outer electron configuration is 3d8 4s2. Then you have to remove 2 electrons, so it will give you Ni2 plus, that is your 3d8 configuration. Now, in the box diagram, if you are putting 8 electrons in 3d subcell, you have to follow Hund's rule 1, 2, 3, 4, 5, then pairing up at 6, 7, 8. This is 3D. After that comes your 4s, which is completely empty, and then comes your 4p, which is again empty. Now you need to give 4 Cl minus ligands. 4 Cl minus ligands. 4 Cl minus ligands are your weak field ligands. Cl minus is weak field ligand. So no pairing of electron occurs in this case. No pairing means those 2 electrons present over here as unpaired electrons will not be paired, will remain as such. So you have 8 electrons in 3D as usual. Okay, so this is your 3D. Now this is your 4s, then comes your 4p. This is 4s, this is 4p. What happens here? You need only 4 empty orbitals, and 4 are available here. 1 is from S, 3 is from P. So the hybridization comes at sp3. So here no d orbital is involved, and you know if the hybridization is sp3, then the structure will be tetrahedral. Yes or no? It is from the beginning of first year. You know if the hybridization is sp3, then the structure will be tetrahedral. So you know how to draw the tetrahedral. Like this. This is the with 109.5 degree. Okay, so the geometry will be tetrahedral. What means देखा पहले octahedral में तमरा hybridization जहाँ से structure आସୁଥିଲା octahedral, किंतु एथिरे तमरा hybridization जहाँ आसीगो different structure. DSP2 हेले square planar, sp3 हेले tetrahedral. So this is your hybridization.
ଦେଖ ପିଲେ ଏଥିରେ ଯେତେବେଳେ ଅନପେୟାର୍ଡ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଦେଖୁଛେ ଏଇଥିରେ ହିଁ ଦେଖୁଛେ ଏଇ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ରେ କେତେଟା ଅନପେୟାର୍ଡ ଅଛି ଦିଟା so n is equal to 2 mu s is equal to 2.9 or 2.89 here so it is कौन है जाउची अच्छा एथरे पेयरिंग नो पेयरिंग होची माने से कौन है जाइतो हाई स्पीड लो स्पीड एथरे विशेष फरक पड़िबो नाही फिर भी लिखि देता जेहेतु पेयरिंग हो এটা कौन हो जाउची इट इज कौन हो जाउची पैरामैग्नेटिक या पूर्वटा Na2 प्लस है कि भी कौन थिला डायमैग्नेटिक ये है गला पैरामैग्नेटिक एथे कौन आसुची पैरामैग्नेटिक ओके सो देखो ए दुटा कॉम्प्लेक्स हमरो गोटे स्ट्रांग फील्ड गोटे वीक फील्ड रो कर देली ठीक है इलेक्ट बर्तन एतिकी रु तमे ताको समराइज करि परलो ए हिसाब रे देखो देखो एमती कर परिबो for coordination number 4 for coordination number 4 दीटा जिनस आसुची एटा तमरा DSP2 आसुची जदि एंट्रांस रे मना के थिबो हायर माने 3D सबसेल छडा जदि 4D 5D सीरीज रो हुए से तबले तमरा SP3 SP2 D आसीबो तो DSP2 आसु SP2 D आसु जे भी आसु तमरा एथरे स्ट्रक्चर सब बेले हे जिवो स्क्वायर प्लानर the structure will be square planar okay if hybridization is your sp3 then the structure will be tetrahedral now this is for strong field ligands this is for weak field ligands एथिरे pairing occurs एथिरे no pairing एथरे पेयरिंग होच माने ये है जीवा लो स्पिन एथरे आसी जीवा हाई स्पिन जो भी पेयरिंग ना होबो ताको लो स्पिन हाई स्पिन करी एथरे से लो स्पिन हाई स्पिन जनरली देखा जाए खाली तमे बे नो नो पड़ तो लिख देछि ठीक है लो स्पिन हाई स्पिन बेसी ऑक्टाहेड्रल रे ही कैलकुलेट हो हबा तो एतिक जिंस जानि वाला ठीक है वर्तमान कोन करथिबो ना गोटे करूछु नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स डेटा एंट्रेंस का बहुत इंपोर्टेंट रही सब बेले देख ए तीनटा कॉम्प्लेक्स निकेल रो बहुत थरा एग्जाम रे पढिलानी आगो को पढिबो मध्य ठीक है डेफिनेटली पढिबो बहुत थरा पढिबो ठीक है कंपाइन NiCO4 ए पर्यंत तमे न्यूट्रल लिगैंड केबे देखिना एथरे देखा आमे कहले स्ट्रांग फील्ड रे हवा कथा स्क्वायर प्लानर फील्ड ये देखिबो आसीबा काहे देखो এটা न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकेल केते आसुची को 0 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकेल 0 माने निकेल केते रहला 28 रा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन केते আছে 3d8 4s2 ताहले एबे जे तळे परिबो Ni then you have 8 electrons in 3d and 4 in 2 electrons in 4s okay so this will be your box diagram 1 2 3 4 5 6 7 8 एठी केतेटा इलेक्ट्रॉन होगला दुईटा तो या को जेतबेले चारिटा CO लिगैंड दबा CO लिगैंड दबा eta a strong field ligand this is strong field ligand so it gives you pairing ओके पेयरिंग करले ठीक है चेक कर निकेल ले कोन हे जीवो
ओके पेयरिंग जेतବେଳେ କରିବ टोटल देखो 10टा इलेक्ट्रॉन अछि 10टा इलेक्ट्रॉन केमिति रखि परिबा 5टा ऑर्बिटल रे 1 2 3 4 5 6 ए पर्यंत सेटा एठी देखो दुईटा अछि ये एठी की जंप करथिबो ए इलेक्ट्रॉन एठी की जंप करिगला ताले कोन हे गेले पेयरिंग हे गेला नाउ यू हैव 3D completely filled 4s empty 4p empty but you need 4 empty orbitals. So the hybridization will be sp3 strong field. The hybridization should have been dsp2, but the hybridization comes as sp3 because it is a neutral complex. तुमको किसी करिया को पड़िबनी तम काम हला तुम जदि ठीक रे देखिथिबो strong field रे pairing है करके चलिबो जहा आसिला दैट इज आंसर ओके भाबिबनी जे ଆଉ ସ୍ପେଶିଆଲି ମୁଁ ତମକୁ କହିଦଉଛି ଯୋଉ ଟେବୁଲଟା ଅଛି ସେଟା ଆୟନିକ ସ୍ପେସିସ ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦବା ହେଇଯିବ ଆୟନିକ ସ୍ପେସିସ ରେ ଏ ସବୁବେଳେ ଭାବେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ନାହିଁ ନିଜେ କରିବ ଠିକ ଅଛି ହବ ଓକେ ସୋ ଦେଖ କଣ କହିଲି ନା ଏଠି ରହିଗଲା ତମର CO 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 ठीक है चारिटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन कला दीटा इलेक्ट्रॉन दे देला ठीक है now the structure कौन हो जाउची sp3 means it is tetrahedral we will have a CO at the center and 4 tetrahedrally coordinated carbon monoxide or carbonyl ligand okay so the geometry will be tetrahedral hybridization will be sp3 here pairing occurs so it is low spin okay so if you find number of unpaired electrons it is coming at 0 so mu s will be 0 then it is a diamagnetic complex then it is a diamagnetic complex okay last one from the BT most important one examiners will ask the question from this one CU NH3 whole 4 2 plus okay तमे जति टेबल टाको देखि दबो संगे संगे आंसर पाइ जिवो तमे जानि थिलो NH in here oxidation state of copper is +2 NH3 is a strong field ligand and you have 4 NH3 means 4 strong field ligand 4 strong field ligand means pairing of us and it will give you square planar geometry okay answer is done एटा शॉर्टकट कहि देली एंट्रेंस क्वालिफाई करला ठीक है टेबल रे जस्ट लिखिथिले कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हेथिबो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हेथिबो तमरो कोन हेथिबो स्ट्रांग फील्ड लिगैंड हेथिबो ताले स्ट्रक्चर कोन आसीबो स्क्वायर प्लानर हाइब्रिडाइजेशन कोन आसीबो DSP2 सिंपल हबा ताले एथरे कॉम्प्लेक्स हिगला ना ठीक है आंसर हिगला बट एक्चुअली ता भीतर बहुत सारा जिंस होइस ठीक है ठीक है देखि दियो एठी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर इज इक्वल टू केते आसे को हा +2 ताले यू नो कॉपर हैज एटॉमिक नंबर 29 द कॉन्फ़िगरेशन इज 3d10 4s1 now you have to form copper 2 plus by removing 2 electrons and the configuration comes as 3d9 when you draw the box diagram for electronic configuration then you are getting 3d9 that is 9 electrons in your 3d subcell 4s is empty 4p is empty 1 2 3 4 5 6 7 8 9 okay when you are putting 4 NH3 ligands and you treat them as strong field ligands you are required for pairing but as it has only one unpaired electron and D subcell is filled up to 4 houses it will not show any pairing एथरे पेयरिंग देखिबो ना किंतु पॉसिबिलिटी है सेठी हो जाय
जदि पेयरिंग ना देखो पहले टिके चेक कल खाली घर कोठ अछि एस आ पी रु तीनटा ताले तम हाइब्रिडाइजेशन आसीबा कथा केते sp3 कोन आसीबा कथा हाइब्रिडाइजेशन sp3 ताले स्ट्रक्चर आसीबा कथा कोन टेट्राहेड्रल बट अनफॉर्चूनेटली एक्सपेरिमेंट रे जेते थरा बिता स्ट्रक्चर देखा गला it gave you square planar structure experiment रे structure x-ray crystallography रे यार स्ट्रक्चर आसिला स्क्वायर प्लानर तमाने तुमको से सब स्क्वायर प्लानर स्ट्रक्चर रे ही देखा गला तो एटा को एक्सप्लेन कैन बी करी ना तो एटा इंपोर्टेंट रहला जे स्क्वायर प्लानर जोटा खाली आके आसुचे एक्सपेरिमेंट के बार बार आसुचे ताको हम मिक्स कर करिया ना तो tetrahedral cannot be the structure of the CuNS3 pole for tetraamine copper 2 complex या को कहते tetraamine चारिटाamine copper 2 plus complex अब तो sp3 hybridization ऐसी करिबा नहीं we must have the sp2 hybridization सेथि ପାଇଁ कौन करिवो again copper 2 plus लिखिवो तो लिखिवो तो electron is excited from 3d to 4p 3d to 4p okay so this is the exceptional thing you have to know in this complex this is 3d this is 4s this is 4p so 8 electrons will remain in 3d in 4 orbitals and the last electron will jump to the orbital of the 4p then you are getting one d empty orbital, one s empty orbital, and two p empty orbital. So the hybridization now becomes dsp2 hybridization. Now you can give 4 ns3 groups over here, and they will form coordinate bonds. As the hybridization becomes dsp2, then your structure will be square planar. Now you have the square planar structure. Okay, now you have the square planar structure of the CuNH3 whole 4 2 plus CuNH3 whole 4 2 plus. Okay. And the geometry will be as expected square planar. This is square planar geometry. Hybridization will be dsp2. Number of unpaired electron n is equal to 1. Here, 1 electron is in 4p. Unpaired electron is present in 4p. So number of unpaired electron is equal to 1. Mu s is equal to √3 bm or 1.732 bm. It is paramagnetic. It is paramagnetic. Okay. Up to this much clear, I think. ठीक है ये सब कॉम्प्लेक्स देखा CuNH3 एथरे कोन है दिवा स्ट्रांग फील्ड CO3 plus CO3 plus तामने ए हेगला 3d6 स्ट्रांग फील्ड तामने सब तक पेयरिंग हो जिबे 1 2 3 4 5 6 छटा पेयरिंग हो गले आसीबा हाइब्रिडाइजेशन d2sp3 octahedral inner D complex ए भले करियर देखो पूरा करा है 3d 4s 4p ताले बर्तन पेयरिंग कर देला स्ट्रांग फील्ड अच्छी पेयरिंग करला छोटा पे इलेक्ट्रॉन तीनटा पेयर हो गले d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन 6 pair of electrons in one from each ns3 occupies 6 hybrid orbitals ये है गला inner orbital complex हवा छोटा इलेक्ट्रॉन का प्रोपोजिटर रहला 4s 4p देता हवा बुझेला ऑलरेडी गुडा का डिस्कशन कर सला
एटा ऑलरेडी कर सच्ची NiCl4 ठीक है NiCl4 will give you tetrahedral देखा पेयरिंग होनी नो पेयरिंग तेणुकरी कोठी इलेक्ट्रॉन रही गले sp3 हाइब्रिडाइजेशन हबा outer orbital complex high spin complex लिखा बात करिए paramagnetic nature mu is equal to 2.89 NiCO पर एवं करथिली tetrahedral but it is कौन है जी diamagnetic since nickel is in zero oxidation state unpaired electron is equal to 0 NiCN4 strong field pairing occurs so pairing occurs DsP2 hybridization pairing एच orbital पड़ेगा तापर रहला DsP2 our structure will be inner d orbital low spin ठीक है low spin unpaired electron 0 it is कौन है like diamagnetic already सब तक डिस्कशन कर it could not explain color देखा VBT के color दे करिवा नहीं CF के color के could not explain the magnetic data of complex काहे की pairing होचे unpairing होचे का low spin high spin होचे एक बार करिए it could not account for spectrochemical series कहते spectrochemical series का हमें देखिए easy है गला but it VBT टाइम रे बाहरी नथिला ठीक है it does not give any quantitative interpretation of the thermodynamics or kinetic stability विषय ये किसी कही नहीं it does not distinguish between weak and strong field ligands what is the hybridization of K2 NiCN4 PC एबे जस्ट करिछ K2 NiCN4 माने NiCN4 2 minus it is 2 minus and this is your 3D8 strong field 3D8 strong field चारिटा लिगैंड अछि strong field ion अछि ताले कोन हो जिवो स्क्वायर प्लानर कोन हो जिवो स्ट्रक्चर स्क्वायर प्लानर ताले हाइब्रिडाइजेशन कोन आसे स्क्वायर प्लानर पे DsP2 सिंपल लास्ट D दा हवा कथा आंसर D आसीबा okay next question what is the hybridization of CONH3 means तुमको complex दीजिए इटा CONH3 whole 6 3 plus এটা আছে 6টা লিগ্যান্ড মানে কোঅর্ডিনেশন নাম্বার 4 তাহলে ডাইরেক্ট হাইব্রিড এই কোঅর্ডিনেশন নাম্বার 6 কোঅর্ডিনেশন নাম্বার 6 মানে কোন হইবা কথা দুইটা অপশন রহিব D2sp3 নাহলে sp3 D2 স্ট্রং ফিল্ড আছে যদি তাহলে কোন হইবা D2sp3 উইক ফিল্ড হলে sp3 D2 শেষ হলো NEET पढ़ी complex the geometry and magnetic behavior एबे करथिले NiCO4 strong field zero oxidation state तंकरी hybridization आसे sp3 structure आसे tetrahedral number of unpaired electron 0 mu s 0 so eta होता है diamagnetic कौन पचार से देखा geometry हले tetrahedral और magnetic behavior माने diamagnetic देखिए the tetrahedral diamagnetic खुद होची हवा which of the following options are correct for efficiency 3 minus okay hybridization it is strong octahedral ताने coordination number हला 6 हला बर्तमान octahedral coordination number 6 strong field माने कोन हे दिबा inner d कोन हे गला inner d complex inner d माने D2sp3 शेष हाइब्रिडाइजेशन कोन हो जाय D2sp3 6टा इलेक्ट्रॉन एटारे अछि 3d5 माने Fe3 प्लस अछि ताले 3d5 स्ट्रांग फील्ड
जदि पेयरिंग कले 1 2 3 4 5 रहिला तमाने गोटे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहुछि n is equal to 1 तो mu s is equal to 1.732 bn हबा ताले ये हो जाଉଛି तमरा कण paramagnetic this is your paramagnetic हबा ताले कोटा करेक्ट होछि b2sp3 para 13 को ऑप्शन ଅଛି ओके এটা অলরেডি করে সার্চ ভিডিও পারছি ইউএনএস ঠিক আছে ଏବେ ଯିବା ক্রিস্টাল ফিল্ড থিওরি ପାଠ ତମର ଆଜିର ଟପିକ ରେ ଥିଲା କ୍ରିସ୍ଟାଲ ଫିଲ୍ଡ থিওরি ओके crystal field theory let us see crystal field theory कौन है crystal field theory in crystal field theory देखो या पूर्व थ्योरी रे हमें एरिया जानिले octahedral complex रे d2sp3 किंबा sp3 d2 hybridization आसुची किंतु एथर ओनली दीटा ही d ऑर्बिटल नउची काहे बाकी तक इन्वॉल्व होना जति इन्वॉल्व होना डी रे जो पांचटा अछि को दीटा को इन्वॉल्व करा होछि ठीक है ये गोटे पॉइंट तापरे कहला स्ट्रांग फील्ड रे पेयरिंग होछि वीक फील्ड रे पेयरिंग हो नाही व्हाई से गोटे क्वेश्चन दा हला अगेन देखिला हम जेतले गोटे कोऑर्डिनेशन स्फीयर रे Fe CN6 लेखिचे 3 माइनस लेखिचे त माने या भीतर गोटे मो पाखरे Fe3 प्लस आयन इज प्रेजेंट and you have 6 Cn minus ligands this is cation this is anion so there must be some ionic interaction also yes or no तो आयनिक इंटरैक्शन विषय रे तो कोनोसी भी थ्योरी रे पर्यंत कहि नाही तो सेठी पई जो कि आयनिक बॉन्ड हुए सेठी क्रिस्टल फॉर्मेशन हुए और ए थ्योरी रे तमरा आयनिक बॉन्ड विषय रे कुहा हेछि आयनिक कैरेक्टर विषय रे कहिछि बोली यार क्रिस्टल तयारी हे परछि बोली या तो कहे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ओके in crystal field theory the electron pairs on the ligand are viewed as it is a important point ligand को कौन हिसाब रे निया हेछि नेगेटिव पॉइंट चार्जेस फिजिक्स रे बार बार पढिचा केमिस्ट्री पढिचा यूनिट नेगेटिव पॉइंट चार्जेस माने स्मॉल नेगेटिव चार्ज हिसाब रे तांको निया हेछि that interact with d orbitals on the central metal with d सहित समाने interact करिसंती the nature of ligand and the tendency towards covalent bonding is ignored साने केते कोवैलेंट बॉन्ड करूचंती केते एक्सटेंड पर्यंत करूचंती ताकू इग्नोर करा हेछि आयनिक कैरेक्टर को इंपोर्टेंस दिया हेछि ओके d ऑर्बिटल्स हमारा पांचटा d ऑर्बिटल थांती d ऑर्बिटल्स गुडा तो के रहले dxi dyz dxz dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर dz स्क्वायर ओके ठीक है सुनो सा पाठ पढ़ला ए जो तीनटा अछि याको कहा जाय प्लानर d ऑर्बिटल्स याको कहा जाय प्लानर d ऑर्बिटल्स ए मानको कहा जाय एक्सियल d ऑर्बिटल्स हबो तो केतेटा प्लानर अछंती इन बिटवीन एक्सिस x y एक्सिस भीतर देखो एटा dxy एटा हला तमरा x एक्सिस एटा हे गला तमरा y एक्सिस ताले x और y भीतर अछि xy भीतर अछि xy भीतर अछि तो ये हे गला dxy ठीक है समझी yz एक्सिस
ऊपरटा हला z एक्सिस हला एपटा सपोज नै जायछि y एपटा को x करछि ताहले या को कहा गला y z एक्सिस देखो xz टा कोन अछि एपटा रखि अच्छा एठी भी x एटा को रखला एटा को y रखला हला अब सब थरे y टा एपटा अछि x एपटा एपटा z हला जा तो जो रख परियो 90 डिग्री रे रखि त एक्सिस okay so this is your x by zx ready बर्तन axial गुड़ाक देखा जाउछि एमती एक्चुअली dx स्क्वायर y स्क्वायर केमती थिबो एटा x axis this is y axis this is the structure of x square minus y square on the axis axial direction में से प्रेजेंट अछि तो को एक्सिस रे रहला x and y याना हेगला dx square minus y square this is your dz square which is present along the z axis only which is present along the z axis only हबा सो z axis टा को हम केमति देखै छै dz square तो से एमिति देखा जाय छै ये गोटे डम्बल रहला एठोटे हेमिस्फीयर टाइप रो रहै छै एटा दिस वन ओके सो देखो जेतले म dz square and dx square minus y square को कंबाइन कर दे छी देखा देखो it looks like something like this is your x square this is your y square so this is completely dx square minus y square and dz square is over here ए गोटिका z axis रे रहला dz square एटा होला dx square minus y square x आओ y axis along रे रखला okay now what happens you have 6 lobes this is one lobe this is one lobe so 6 lobes are there so directly 6 ligands can overlap coordination number 6 crystal field for coordination number 6 octahedral complex रे प्रथम देखो कहा सहित लिगैंड इंटरैक्ट करूची ना एक्सियल सहित आउ टिके डिटेल्स रे कहती गोटे थरा ताहले क्लियर हो जिवो सब तक क्वेश्चन तमे करि परिबो ठीक अछि सो क्रिस्टल फील्ड डायग्राम विषय कहूची प्रत्येक स्टेप कहि चलिए this is your for coordination number 6 coordination number 6 ठीक है this is your energy axis you have 5d orbitals 5d orbitals of 5 see this is 5d generate एथरे टर्म गुडा का इंपोर्टेंट 5d generate d orbitals 5d generate d orbitals of 3 central metal एटा केता बळे थिबो एके सुनो ताले जानि परिबो सपोज मो पाखरे गोटे मेटल अछि मु 6टा ml6 कॉम्प्लेक्स करी ता माने 6टा लिगैंड सब डायरेक्शन रो आसीबे ओके ये आसीबो समस्त आसीबे किंतु पाठ कहिला केतबळे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हबो जे माने जेतबळे समान गोटे पर्टिकुलर पोजीशन को आसीबे सपोज ए पोजीशन ता Button ligand infinity distance means there is no interaction between metal and ligand. This is infinity distance. The button infinity distance re d orbitals of metal are static. ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଏ ଯୋଉ dxy dyz dxz and dx square minus y square dz square 5d orbitals have the same energy this is the energy okay जेहेतु सेम एनर्जी रे अछंते ताको कहले d generate orbitals जो जो ऑर्बिटल एनर्जी समान थिबो ताको कहले d generate orbitals
if the energy of orbitals are same, then called degenerate orbitals. Like ପାଞ୍ଚଟା orbital ର energy ସମାନ ଥିଲା. Okay, next ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ligand is moving towards metal ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଛି ଏଇ ଯାଏଁ ଆସିଛି ଠିକ ଅଛି. स्पीयरिकली माने चारि दिग माने सब दिगरु से इक्वल अप्रोच करिछि किंतु समान डिस्टेंस रे आछिते सो दैट मेटल इक्वल इंटरैक्शन बा अट्रैक्शन बा तांका भीतर फोर्स फील करी. ओके ए पर्यंत लिगैंड एठी पहुंचबा कथा इनर सर्कल रे पहुंची अधा बात रे तमाने लिगैंड इज अप्रोचिंग. तो मेटल पाखरे इलेक्ट्रॉन अछि मेटल रा इलेक्ट्रॉन्स एंड लिगैंड्स रा लिगैंड्स आर इलेक्ट्रॉन रिच. तो से माने नेगेटिवली चार्ज थांती बा अधिक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थाए. तो यार इलेक्ट्रॉन मेटल रा इलेक्ट्रॉन भितरे repulsion is there. Okay, always repulsion leads to destability. repulsion बढ़ियो माने stability कमिबो. stability कमिबो माने energy बढ़िबो. तो एथि टाइम जेतले फ्री मेटल थिला तार पांचटा जक डी ऑर्बिटल लोअर एनर्जी रे अछंती जेतबेले सेमानकर लिगैंड अप्रोच कला सेतिके बेले तमर एनर्जी रिपल्सन जोगु बढ़ी गला स्टेबिलिटी कमिला रिपल्सन जोगु एनर्जी बढ़ी गला dxy dyz dxz dx square minus y square dz square ई पांचटा ऑर्बिटल रो एनर्जी बढ़ी गला. Still they are in equal energy level ता 8 इसी तरह is. Okay, this is the energy level. Okay, so यहाँ को कहा गला 5d generate d orbitals. 5d generate d orbitals अब कहार कहले central metal when ligands 6 ligands approaches spherically. Okay, ए पर्यंत लिगैंड पहुंची नाही जस्ट आसुच तेणु करी रिपल्सन बढ़ी के समस्त एनर्जी बढ़ जाउची. ओके, नाउ व्हाट हैपेंस ना देखो जेतबेले लिगैंड एठी आसी गला जेतबेले लिगैंड ए पर्यंत पहुंची गला ठीक अछि से नाउ खोजिबो मन रखिथिबो एटा गोटे डम्बेल रे this is your lobe गोटे लोब रे गोटे लिगैंड ओवरलैप कर परिबो. सो octahedral field रे ठीक रे समझा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 octahedral complex रे 6 ligands are coming. If 6 ligands are coming we need 6 lobes. ठीक है चित्र गोटे देखौची ताहले जानि परिबो. पतन देखो ए चित्रटा को देखो जदि मु dxy रा चित्र नउची ठीक अछि dxy बा yz एटा dyz dxz dxy ए भीतर कहा को नउची एठी गोटे लिगैंड एठी गोटे चारिटा ही लिगैंड लागि परिबो. ठीक अछि किंतु जेतले मु एक्सियल डेटा ए दीटा जका एक्सियल एमिति देखा जाउछंती तो एठी जेतले नउची at a time तमर 6टा जक लिगैंड लागि परिबे. लिगैंड जेतले आसंती तांको इक्वल इंटरैक्शन वाला ऑर्बिटल दरकार डिफरेंट वाला दरकार नै. जदि dxy नबो yz नै दिबो 8टा लोब मिलिबो किंतु से माने अलगा एक्सिस रे अछंती तेणु करी सेठी से माने इक्वल इंटरैक्शन पाई परले नाही 6टा लिगैंड केस हबा. तो सेठी पई आउ टिके जदि देखिबो आ गोटे चित्र देखौची देखो एइथिरे देखैची आउ टिके कोन कहछि
এইথিরে যেতବେଳେ z axis রে dz স্কয়ার দেখো এটা কোন আছে dz স্কয়ার dx স্কয়ার মাইনাস y স্কয়ার আছে এମାନେ কোন করନ୍ତି না এইথিরে লিগ্যান্ডস ওভারল্যাপ উইথ অরবিটালস মানে কাহা সହିତ ওভারল্যাপ କରୁଛନ୍ତି ନା ତମର axial orbital ସହିତ କାହିଁକି axial ରେ ତମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଡେନ୍ସିଟି ଅଧିକ ଥିଲା axial ରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଡେନ୍ସିଟି କଣ ଥିଲା मोर थिला 6टा डायरेक्शन रो आछितंती एक्सिस टा केमिति हिथाय एमिति ठीक अछि जदि देखिबो एमिति गोटा प्लेन कली ठीक अछि ए प्लेन में मध्य रे रहला मेटल ये हे गला तमरा एक्स एक्सिस ये हे गला तमरा वाई एक्सिस ऊपर गोटे तळ गोटे एटा हे गला जेड एक्सिस ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस ये जेड एक्सिस तो 6टा डायरेक्शन रो 6टा लिगेंड जेतळे आसीबो ए गोटे सिमेट्रिकल स्पेस रे आसीतंती तो सेति पय स्फेरिकल सेट हेई पारिला माने सब डायरेक्शन इक्वली आसी पारिले तेनु करी लिगेंड जेतळे प्रथमे 6टा आसंती सबले कहा पाखको आसंती एक्सियल डी ऑर्बिटल्स माने पका आज वीवीटी क्लास रे पढिछ डी ऑर्बिटल्स तो मैक्सिमम केतेटा नै परिबो डीटा नो थिला ऑक्टाहेड्रल पय d2sp3 और sp3d2 ये जो d2 डीटा नै जे समान किए ऑक्टाहेड्रल केस रे हे गले ना dx स्क्वायर dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर and dz square question बहुत सारा पढ़ी सारिछि जे which d orbital are involved in overlapping with ligand in case of coordination number 6 octahedral complex which d orbital प्रथमे overlap करछंती axial रे के रहिले dx square minus y square and dz square सेते पई सब तक ऑर्बिटल खाली थिले भी तमे केतेटा ऑर्बिटल नै करबो वीवीटी रे दीटा तो दीटा कोन होचे dx square minus y square and dz square क्लियर सो वर्तमान देखो लिगैंड कहा पाखु आसिले पाठ पहिला लिगैंड कहा पाखु आसिले ना जहा जो माने एक्सियल रे अछंती जहा पाखकु आसीबो सेठी रिपल्सन बढ़ जायतिबो ठीक अछि तो पाठ पहिला जो ठीक आसिला लिगैंड तार रिपल्सन बढ़िबो जहार रिपल्सन बढ़िया ता अनस्टेबिलिटी बढ़िबो ता माने से माने अनस्टेबल हेबे जे अनस्टेबल हबो से ऊपर हायर एनर्जी को जीवो तो हायर को केतेटा ऑर्बिटल हमर जाउचंती डीटा केतेटा ऑर्बिटल जाउचंती डीटा लोअर को केतेटा जाउचंती ना तीनटा कंबाइना जो डीटा प्लानर रे रहिले तांका पाखको लिगैंड गले नाही तांकठो डिस्टेंस मेंटेन करि गले रिपल्सन बिटवीन planar d orbitals and ligand decreases repulsion between axial and ligand increases जहार रिपल्सन बढ़िबो समानकर हायर एनर्जी हे जीवो तो हायर केतेटा ऑर्बिटल रहिले डीटा लोअर रे के रहि गले dxy dyz dzx xz ओके नाउ तमर ई जो तीनटा अछंती तळे these are triply degenerate तीनटा रो समान एनर्जी अछि तेनु करी यांको कहागला T2G यांको कहागला T2G से these are evenly degenerate ओके ये हे गला पीसी तमर खाली एती जानिबार अछि d orbitals free state रे लोअर एनर्जी रे थिले जेतले लिगैंड अप्रोच कला एनर्जी बढ़िला then when ligand overlaps they are divided into two sets T2G is the containing dxy dyz dxz and EG set evenly degenerate set contains the x square minus y square and dz square okay जीटा को तो कहते जेराड सेटा तो पाठ अधिक ताकर हमर एक दरकार खबर नाही जब दरकार हला नेक्स्ट क्लास रे कहले न हले तमे जानता ऑक्टाहेड्रल रे जी टर्म रहिबो टेट्राहेड्रल रे जी टर्म ता रहिबो नाही एति के मन रखि देले ठीक है एंट्रेंस पे एति हमर मन रख देले ठीक है
मन रखिथिबा ए जो पांचटा ऑर्बिटल जो लाइन रे थिले this is called your barycenter. This is your barycenter. Okay, the energy gap between T to G and EG is called your delta O. Delta O. Delta O is called CFSE. CFSE. CFSE is your crystal field. Crystal field. Stabilization energy. Stabilization energy or crystal field splitting energy भाग होइके तांका भितर जो एनर्जी गैप आछे ताको बाजे स्प्लिटिंग एनर्जी CFSE एटा को हमको कैलकुलेशन दे करिवार अछि ठीक अछि okay now comes the best part of this theory the strong field with अच्छा एबे पर्यंत आउथरे कहि देछि when ligands are not present three central metal has 5d generate d orbitals when ligands are approaching from infinity spherically the repulsion between metal and ligand increases so energy of 5d orbitals are increased then when ligands overlap in case of octahedral they initially overlap with axial d orbitals so there is dx square minus a square and dz square it gives evenly degenerate set EG. The axial orbitals are away from overlapping with ligand, so they are stabilized and gives the set T2G. T2 is G is present below the barycenter, EG is present above the barycenter. Okay, the energy gap between T2G and EG set is called your CFSE delta O. This is crystal field stabilization energy or splitting energy. एठी पाठ कहला जे पेयरिंग केतबेले हबो केतबेले न हबो पाठ कहला जेतले स्ट्रांग फील्ड लिगैंड थिबो वीक फील्ड लिगैंड थिबो सिनेरियो किछि एमिति रहिबो ऊपर इजी रहिला तळे T2G रहिला किंतु स्ट्रांग फील्ड रो पावर अधिक बोली ए केस रे स्प्लिटिंग माने डिस्टेंस बिटवीन द एनर्जी गैप बिटवीन T2G EG इज मोर ओके किंतु वीक फील्ड रे एटा हे गला वीक फील्ड पई दिस इज फॉर स्ट्रांग फील्ड ओके तो वीक फील्ड रे हमारा एनर्जी गैप बिटवीन T2G and EG is less so now देखो एटा हे गला कथा वर्तमान पेयरिंग काहे कि हुए न हो से विषय टिके डिस्कशन करछ कोन हे गला suppose I have 4 electrons here d4 configuration then 4 electrons will be present over here okay now when I am putting the electrons in weak field condition 3 electrons will present in T2 then the fourth electron will jump to EG because this delta O energy gap is less तमाने गोटे काम तमे करिया को चाहछ जने कहिला तापई पेयर रे दी जन लोक काम करिवे जदि पेयरिंग एनर्जी लागि गला सेठी से दी जन लोक काम कले 20 टका रे काम करिवे जने कले 200 टका रे करिवे एटा गोटे कंडीशन ओके
कंडीशन टा खाली कह देउची सरी ठीक अछि तो पाठ कहला एथि पेयरिंग हैला नाही काहे कि ना पेयरिंग एनर्जी टा अधिक अछि पी टा अधिक अछि तो से हबो ना ठीक अछि एटा इंपोर्टेंट कंडीशन जो कि पेयरिंग एनर्जी अधिक से पेयरिंग हबो नाही ऊपर को जंप करि जिवो ताले एथि पेयरिंग हो नाही को फील्ड रे वीक फील्ड रे किंतु स्ट्रांग फील्ड रे एनर्जी गैप टा अधिक चारिटा इलेक्ट्रॉन रखला बेले तीनटा रखला पर फोर्थटा जंप करि पारु नाही सो पेयरिंग हो जाउची तो ए केस रे ताकू लागिला पेयरिंग करिवाटा प्रिफर हो जाउची तो पेयरिंग एनर्जी लेस रहबो स्ट्रांग फील्ड this is the crystal field structure diagram of coordination number 6 एतिकी थिला आजिर टॉपिक नेक्स्ट क्लास रे सीएफसी कैलकुलेशन और टेट्राहेड्रल रो और देले सीएफबी सेशन ओके thank you all for today's class रखी जब ठीक ठाक बुझिल यस कर दियो ठीक है